Okay. So hello everyone, and this is Bhavna Badla, tarot reader, numerologist and your Vastu specialist. And my today's reading is on the feeling and the emotions of your partner. What is their present feeling? What are their present emotions right now toward this relationship you are going to come to know about in this video through these piles. So here are the three piles. This is pile number 1, this is pile number 2, and this is pile number 3. And basically, you can select these piles thinking about your partner in the mind. You can see these piles right now on the screen and select one pile intuitively thinking about your partner. And that pile will give you an answer. What is their feelings right now? What are their current emotions? Trust on the reading and they will be true. And it is actually the fact. Haven't you listened about it, right? Okay. So now before starting this video, till now if you haven't subscribed my channel, hit a subscribe button, hit a bell icon so that you get the notification whenever I post new video, and hit a like button so if this video actually resonates with you. Time pile is already given in the description box so you can go and check out there. Okay, so now coming with the pile number 1. So this is pile number 1, this is pile number 2, and this is pile number 3. First we are going to talk about this pile number 1. I'm going to tell you the meaning of each and every card. Here I have used 3 of my deck, that is Rider-Waite, Osho Zen, and my angelic deck, which will give you an angelic guidance. So here are the cards from Rider-Waite deck. So the very first card I got for you is the beautiful card of the Lovers. So this Lover card, it is basically the card of the soulmate, it is the card of the twin flame, and it is the beautiful cards which shows the overflowing of the emotions, which shows the connections, which shows the compatibility between you and your partner, which shows the communication between you and your partner is like emotionsful. It is showing the emotions from both the side, from your end also and from your partner's end as well. And it is the kind of a relationship whose Cupid is also blessing, isn't it? You kind of see the Cupid above. And he's blessing your relationship. Maybe somehow there is a God, God's belief, या आप ये कहो कि God की खुद की मर्जी है कि to make you enter into this relationship, और इसी reason की वजह से आप इस relationship के अंदर enter करा है आपने. I know there are ups and downs, as you know, the mountains are showing us. There are ups and downs in your relationship. There are miscommunication. There are trust issues as well in the relationship. But they are of very short period of time. They are not going to take much long time. They will be sorted out with the time. जो भी miscommunication हो रही है, जो भी ups and downs आ रहे हैं, वो सारे time to time sort out होते रहेंगे, because this is your relation, right? And it is a beautiful relation who is being blessed by the God, who is being blessed by the angel, and it is a beautiful relationship and a beautiful connection between you and your partner. You both enjoy. Basically, if I talk about his feeling, he enjoys your company. He enjoys telling you his secrets. He almost comes to you to share his secrets. He comes to you to take advice. He's that kind of a person, and he really have an emotion. He really have a feeling for you, and he think that yes, this is the person whom should I spend my life with. And he is a trustworthy and an honest person who honestly tell his feelings to you, right? So it is that kind of a card. And sometimes when I do the reading now, I get this question that whether our relation will come to a next level or not. When I do the reading, most of the people usually ask me this question, that whether we are going to get married or not, whether we have any future in this relationship or not. Then this is the card that is the answer to your question, and that says yes. तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जरूर पहुंचेगा. आपका जो रिलेशन है विल टेक अ नेक्स्ट स्टेप, वो मैरिज तक पहुंच सकता है. मे बी देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल, सम सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपके पेरेंट्स एग्री ना करें या किसी तरीके की ऑब्स्ट्रैकल जरूर आ सकते हैं, लेकिन इट कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल. एंड इट्स एन इमोशंस, एंड एवरीवन विल बी सरप्राइज्ड एंड amazed to see that, oh my God, they both actually get married, and that will be the reaction of the people. This card is telling me that. Then this card gives you that conformity that yes, your relation will reach us to the next level. It will reach to the level of marriage. It will reach to a level where you both are together in future.
right? And there is a happiness all around, there is a success all around, there is a success in the relationship, and this is that card conformity is giving you. The another card I got for you is the card of the Empress, which is showing the caring personality. He cares a lot, he or she, I don't say he, he or she both. Your partner basically cares for you a lot, cares you like a mother cares for her kid, and same how वो आपके साथ care करता है, आपके साथ confirm है, आपके साथ comfortable है, आपके साथ है वो, और आपकी company को enjoy कर रहा है. एंड ही फील दैट येस, ये एक वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, एंड यू आर लाइक फ्रेंड टू हिम एज वेल. मे बी फॉर सम ऑफ द पीपल दे हैवंट गॉट द कंपैटिबिलिटी, या फिर सॉरी कंपैटिबिलिटी आई एम सेइंग इट, उनको अभी तक कंफर्मिटी, या फिर मैं ये चीज कहूंगी कि अभी तक वो रिलेशनशिप में प्रॉपरली हो सकता है नहीं आए हैं, एंड दे आर लुकिंग टू इट कि वो न्यू मतलब इस रिलेशनशिप के अंदर एंटर करेंगे तो ये नहीं. तो दिस इज द कार्ड येस विच सेज येस कि आपको अपने रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के अंदर आप एंटर करोगे. अगर अभी तक आपको वो कंफर्मिटी, या फिर अगर अभी तक आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर एक कमिटमेंट नहीं मिली है, तो बेसिकली दिस इज द कार्ड जो कहता है कि यस आपको वो कमिटमेंट मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी अगर अभी तक नहीं मिली है, एंड इट इज दैट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव कार्ड. ओके, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत मतलब कंपैटिबिलिटी और हर तरीके की पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर हैं, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप जो कि आगे काफी लॉन्ग टर्म तक रह सकता है. नेक्स्ट कार्ड विच आई गॉट फॉर यू इज द कार्ड ऑफ अ हीलिंग, जो कि कहीं ना कहीं ये कहता है कि मे बी पास्ट में आपके जो रिलेशंस रहे होंगे आर नॉट दैट वेल, और ये आपको रिलेशनशिप आपकी हीलिंग करने के लिए आया, यानी आपको पास्ट में जितने ट्रॉमास रहे हैं उन सब से निकालने के लिए आया है. दे आर दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली टू हील यू फ्रॉम ऑल योर पास्ट बाउंड्स, ऑल योर पास्ट रिलेशनशिप्स, ऑल योर पास्ट इश्यूज जो कि आपके पास में रहे हैं, तो उनसे हील करने के लिए बेसिकली आप शायद इस रिलेशनशिप के लिए एंटर करे हो, और आपको आपके इस रिलेशनशिप में वो सारी चीजें मिलेंगी विच यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. अ गुड कम्युनिकेशन, अ लव, अ केयर यू वांट, all you are going to get through this relationship. Now the angelic message which I got for you guys is the romance. Maybe this is the situation, this is the card which is telling कि romance जो है will develop in your relationship, and this romance will make your relationship more stronger, more worthful, and it will going to be it will bring your relationship to a best level, to a next level, which I say. And the romance is the basic angelic guidance which is in your relationship and which is making your relationship more stronger. Okay, so this is the reading for people who have chosen pile number 1. Hit a like button if it actually resonates with you. Okay, now coming to the pile number 2. Okay, so there are the beautiful cards for pile number 2. Okay, so here are the first card which I got for you guys is 3 of Swords. Okay, so those people who have selected pile number 2, maybe their expectations related to the relationship are not fulfilled. Maybe in your relationship there is lots of pain, lots of miscommunications. There could be a chances of breakup, or maybe are watching or have selected pile number 2 because कि उनके relationship या तो अब end हो चुका है, either they are hoping कि अब ये end ही होने वाला है, there is no hope left. तो शायद उन्होंने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, एंड दिस कार्ड इज बेसिकली टेलिंग द पेन, द लोनलीनेस यू आर राइट नाउ फीलिंग इन द रिलेशनशिप, एंड दिस इज दैट कार्ड इज टेलिंग अस कि लोनलीनेस, वो गिल्ट आप फील कर रहे हो, एक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग ऑफ द सिचुएशन, मे बी इज द सिचुएशन राइट नाउ आप इस रिलेशनशिप में फील कर रहे हो. एंड येस देयर कुड बी चांस दैट कि आप इस रिलेशनशिप से निकलकर किसी और रिलेशनशिप में एंटर करो, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मे बी इज नॉट दैट फ्रूटफुल और मे बी नॉट गिविंग यू द थिंग्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड. सो द सेकेंड कार्ड विच आई गॉट इज द 5 ऑफ Wands. मे बी ये भी पॉसिबल है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, दे हैड अ ब्रेकअप, एंड during the breakup they both have talked so badly with each other. There was like a
वर्बली भी अच्छी फाइट, वर्बली देयर इज अ फाइट, देयर इज अ फिजिकल फाइट, और यू कैन से सच काइंड ऑफ वर्ड्स जो यूज करे गए हैं उस ब्रेकअप में विच आर नॉट दैट गुड, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे, और उन्होंने आपके अंदर एक इगोइस्टिक, एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया है, ठीक है। और आप अब इमोशन से ज्यादा उस ईगो की वजह से यू आर मोर हर्टेड राइट नाउ। तो दिस कैन बी दिस सिचुएशन जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, एंड मे बी राइट नाउ यू आर फीलिंग दैट पेन बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स विच हैज बीन स्पोकन टू यू ड्यूरिंग योर ब्रेकअप, या ड्यूरिंग लाइक, या फिर ये भी सिचुएशन इसके अंदर हो सकती है, मे बी आप दोनों पार्टनर्स के बीच में जो टॉक हुई है या ऑलमोस्ट फाइट्स ज्यादा होती हैं, या फिर ये भी सिचुएशन है इफ यू आर नॉट इनटू अ ब्रेकअप सिचुएशन, तो आपके बीच में फाइट और मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द बेसिक सिचुएशन विच आई कैन सी in the relationship. Third card was here is a 7 of cups. So 7 of cup is basically the card which is telling the confusions right now, you, or it can be for your partner that who is confused whether to stay in the relationship or you need to move on from the relationship. You are not able to decide, or your partner is not able to decide this thing कि अब इस relationship में what is there left. There is no emotions, there is more stress, there is more anxiety, there is more guilt, there is more pain, there is more like miscommunication, there is trust issues after all are there, and those trust issues are basically due to their past relationship also. So basically you both are not able to decide whether to stay in the relationship, or for some of the people are not getting the commitment also in the relationship, because it is also that card that you are being stuck into a relationship and you are not getting it. You are not able to understand whether what is actually happening in the relationship. You are not able to understand this thing. So this is the basic card which is telling me that there is very less amount of a commitment also. Okay, and the next card which I got is for you is a card of maturity, which is telling you need to deal with the situation on a mature level. आपको mature level पर जाकर you need to handle the situation. If you are dealing it with an irresponsible person, if you are going to deal it with like कि छोटी छोटी बातों पे अगर आप नाराज होते रहोगे, छोटी छोटी बातों को अगर आप you get hurt on those small things ना, तो आपके relationship will not work like this. जैसे उसे वर्क करना चाहिए वो ऐसे वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा. तो दीज आर बेसिकली द स्टेप्स, दीज आर बेसिकली द कार्ड्स व्हिच आर टेलिंग कि आपको इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ करनी है अपने रिलेशनशिप के अंदर, राइट? बिकॉज योर पार्टनर इज राइट नाउ इन अ कंफ्यूजन स्टेट, इज टोटली नॉट एबल टू डिसाइड वेदर टू बी कमिटेड, और your partner is right now not happy in the relationship and you need to make him more comfortable, and this is what these cards are telling us, right? He is right now feeling emotionally very distressed. He is right now feeling, he or she, I must say that he or she is right now feeling more emotionally distressed and not able to decide whether what to do in the relationship, right? So these are some of the steps which you need to take care to make your relationship more stronger. If you want to make the relationship more stronger, the next card which I got, angelic messages to forgive whatever has happened into the past and take your relationship, just clarify the things between you and your partner through talking to him, through the communication. आपको forgive करना चाहिए उनकी काफी चीजों पे. Ego, just keep the ego aside, just keep your complex aside, and then just talk to your partner, clear all the confusions, just forgive him for whatever mistake he has done. If he actually says to you that yes, he is sorry about it, he is guilty about it, then accept it. Don't bring those trust issues inside your relationship, because that won't serve you longer, right? That won't make your relationship stronger. So you need to work on all these areas to make your relationship more stronger, to make to heal your relationship. And this is basically these cards are telling us. Okay, I hope you have gained the clarity for the emotions and the thought of your partner. Now coming to the pile number 3. So those people who have selected pile number 3. Okay. So here are the cards. The very first card which I get to know about your relationship, the very first and the positive card is there, which is a page of cup, the immature card, but it is a beautiful card. It's a very romantic card of the deck, and which is also telling us that maybe it was your partner who has proposed you, right? Who like made you more comfortable, आपको बहुत comfortable करता है, and कहीं ना कहीं आपका partner है जो कहीं ना कहीं चाहता है वो पूरा खुद ही इमोशनली बहुत फुलफिल्ड है और इतना हैप्पी है इस रिलेशनशिप के अंदर आपका पार्टनर,
that he was like कि I don't, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे इतना अच्छा पार्टनर मुझे मिल गया, इतने अच्छे रिलेशनशिप में मैं एंटर कर गया. ही वॉज सरप्राइज्ड दैट ओ माय गॉड, मैं भी ऐसे इतने अच्छे रिलेशनशिप में एंटर कर सकता हूँ, या मुझे ये लड़की है, मुझे ये लड़का कैसे मिल सकता है. ही इज जस्ट टोटली अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड दैट वाओ, फाइनली आई हैव गॉट द पर्सन ऑफ माई ड्रीम्स, फाइनली आई हैव गॉट द पर्सन जो कि मतलब मेरे लिए है एक्चुअली. एंड ही इज राइट नाउ हैविंग दैट फीलिंग कि वो आपको जैसे कहीं जाने ना दे. ही वॉन्ट्स टू होल्ड यू लाइक दिस, right? He is trying to save you, and this is what this card is telling us. This is also a stalker card. Most of my videos you have come to know about it if you have watched my previous videos. Then he might be stalking you on the social media also. Either if you are in relationship also, he's stalking you on Facebook, Insta and other social medias as well. He's looking to you, he's keeping almost his eye on you, that whatever you are doing, kahin na kahin wo nazar rakh raha hai aapke upar. And this is the card which is giving me that assurity. Okay, so the second card I got for you is the Five of Cups, and this Five of Cup is basic card जो कि कहीं ना कहीं is telling me कि पास्ट में भी आपके पार्टनर का या आपका कोई ऐसा रिलेशन रहा है जिसकी वजह से आपको ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं क्यों. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो, आप जल्दी से आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, या जल्दी से उसे कॉल नहीं करते हो, बिकॉज यू फील समहाउ कि यार मैं अगर इस पर्सन को कॉल करूंगा ना तो इट वुड बी, कहीं ना कहीं आपका ईगो बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बीच में आ रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड दैट, बट यू आर नॉट थिंकिंग कि वो सब चीजें अब जा चुकी हैं आपकी लाइफ से. यू हैव टू स्टे इन टू अ प्रेजेंट सिचुएशन. आपको जरूरत है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में रहो. ठीक है, योर पार्टनर इज ट्रस्टफुल, ही इज लुकिंग एट यू. आपका पार्टनर आपको ज्यादा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट कंफर्ट जोन इन यू, राइट? तो वो कंफर्ट जोन में आप खुद फिट नहीं बैठ रहे हो, राइट? तो इट इज फॉर यू कि आप उसमें कंफर्ट जोन में आप फिट बैठो. जस्ट लीव वट एवर हैज हैपेंड इन टू द पास्ट एंड जस्ट डोंट, इट वाज एक्चुअली नो यूज टू क्लिंग इन टू द पास्ट, राइट? Third is a card of a beautiful card of a judgment, which is telling you you have to realize your mistake, because somehow you are also making some of the mistakes and you are not understanding that thing कि आप उन चीजों को नहीं समझ रहे हो, that what mistake you are making right now. You need to come out of all those things. आपको उन मिस्टेक से बाहर निकलना है, राइट? आपको soon realize होगा कि कहीं ना कहीं at last आपकी भी मिस्टेक रही है. ठीक है, आप जो रिलेशनशिप आपका अगर फ्लरिश नहीं कर रहा है, आपका रिलेशनशिप उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इट इज यू हैज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल्सो योर मिस्टेक. यू आर नॉट एबल टू मेक योर पार्टनर कंफर्टेबल, यू आर नॉट एबल टू मेक हिम कि वो आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करे, या फिर वो आपके साथ ज्यादा कंपैटिबल. आपका रिलेशनशिप कंपैटिबल है, ठीक है, इट्स अप यू. अब आपकी बारी है कि आप अपनी साइड से वो लव, वो इमोशन अब अपने पार्टनर को शो करो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो. दिस इज द basic card which is telling us that. And the next card which I got for you is a beautiful card of a trust, and which is also again telling you कि it is necessary for you कि अब आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट लेवल लेकर आओ. ठीक है, डाउट्स, शक करना छोड़ दो इन चीजों को, बिकॉज दे वोंट मेक एनीथिंग लाइक, कुछ भी नहीं करेंगे. आप इस पर्सन के साथ अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाए, तो अगर भी आगे आप नेक्स्ट पर्सन के साथ भी एंटर करोगे ना, वहां पर भी यू विल नॉट एबल टू ट्रस्ट योर रिलेशनशिप, राइट? सो इट इज नेसेसरी, जस्ट ट्रस्ट द रिलेशनशिप. ट्रस्ट कर फुल्ली 100% ट्रस्ट कर जस्ट गो अहेड. ठीक है, मेक हिम कंफर्टेबल, मेक हर कंफर्टेबल. ठीक है, रिलेशनशिप, जस्ट शो योर इमोशन, जस्ट कॉल हिम, talk to that person and just show what you're feeling. Just don't hide your feeling. These are the cards which is also telling me somehow that you're hiding your feelings. You're just not able to communicate in the way you need to communicate to that person, right? You're not able to communicate to that person. So it is absolutely required to trust that person, to believe in yourself, believe in the relationship. Okay, believe in your destiny. It is more required right now. Okay, and the angelic message for you is to remain positive. You need to remain positive in your relationship. It won't make other thing. It is very much required for you right now to just remain positive for your relationship. You are getting more negative. The more here the cards are showing me that you are negative in yourself. Why are you negative? Why are you so depressed? Anxiety. There are lots of anxiety. So you need to remain positive in your relationship. Just trust your relationship and be happy. Just if you just, you know what,
the problem you are doing is कि छोटी छोटी बातों को you are taking it so serious that you are trying to judge on those small things. Don't do that thing. You need to remain positive for your situations. You need to remain positive for your relationship basically. So this is the reading for pile number 3. I hope you have gained the clarity about the emotions and the thought of your partner. If this video actually resonates with you, hit a like button. You can also follow us on Facebook, Insta, and links are already in the description box. Go and check it out. And thank you so much guys, and lots of gratitude to watch this video. Hit a subscribe button. Bye bye.